कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको अशोक सरावगी के बारे में बताया था. ही इज़ अ क्रिमिनल लॉयर एंड ही इज़ रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द की अक्यूज्ड इन द केस जिसका नाम है श्रुति मोदी. नाउ हियर्स मोर. अशोक सरावगी, obviously one of the most dubious and one of the shadiest characters as it's being reported in the media about him, कि 2019 में September में he was arrested for cheating and forgery in a land grab case in Raigad. उसके बाद also let me remind you, he is the same guy who has represented Abu Salim and he is also represented प्रत्युषा का बॉयफ्रेंड जो टेलीविजन एक्ट्रेस का सुसाइड हुआ था, राहुल राज सिंह, एंड द केस वॉज ईरियली सिमिलर टू दैट ऑफ सुशांत सिंह. और उसमें ही वॉज रिप्रेजेंटिंग द अक्यूज्ड अगेन एंड नाउ इज रिप्रेजेंटिंग श्रुति मोदी. बट दैट्स नॉट द बिजार पार्ट. द बिजार पार्ट इज दैट his wife Sarla Saraogi has already started shooting a film which is based on the Sushant Singh case, and this despite the family saying that anybody doing so will be subject to legal prosecution. अब अशोक सरावगी जो एक lawyer है, criminal lawyer, he is representing one of the accused, he is doing this, which itself makes it extremely wrong on so many levels. He is saying that I have followed this case for a long time and I have written everything in a diary. और जब मैंने वो डायरी एक डायरेक्टर को दिखाई, some गुलाटी, और तो उनको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी एंड ही सेड लेट्स गो अहेड एंड मेक इट. सम जुबैर खान इज प्लेइंग Sushant Singh and some Shreya Shukla is playing Riya Chakravarti, and he's saying that this entire film will be from Riya's standpoint, and also he's claiming that this film of his जो उनकी वाइफ बना रही है सरला सरावगी will give justice to everyone associated to the case. I mean, how can a lawyer talk like that? And he's saying this to the media. I mean, this is so ridiculous. This is a case which is being investigated right now. There is so much हैपनिंग इन द केस. एवरी डे न्यू रेवलेशंस आर हैपनिंग. और इन भाई साहब ने ऑलरेडी शुरू भी कर दी है फिल्म बनाना, जबकि फैमिली ने बहुत कैटेगोरिकली मना किया इसके लिए. दे सेड दैट 2 सितंबर से वो कह रहे हैं कि हमने शूटिंग शुरू भी कर दी है मड आइलैंड में, और उनकी वाइफ इज हेल्मिंग द प्रोजेक्ट विद सम डायरेक्टर. एंड हियर्स वेयर इट गेट्स ऑल द मोर रिडिकुलस. जब उनको बताया गया कि द फैमिली हैज सेड नो टू मेकिंग अ फिल्म एंड देयर इज अ लीगल एस्पेक्ट इन्वॉल्व, तो एक लॉयर होते हुए देखो ये क्या कह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि उसमें क्या है, every film is inspired by some or the other real event, and we can say that this film is inspired by Sushant and Riya's case and something like that, and anybody can make a film, there is nothing wrong in it. एक क्रिमिनल लॉयर जो एक अक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस में, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई, चल रही है, केस सब जुडिस है, उसमें उसकी वाइफ फिल्म में बनाना भी शुरू कर दिया है विदाउट कंसेंट फ्रॉम द फैमिली, एंड ही इज जस्टिफाइंग इट ऑन टॉप ऑफ इट एंड ऑल्सो सेइंग दैट आई एम द वन हु एक्चुअली started this idea and started this project, only my wife is making it, and he's also justifying and giving reasons why he should and why how he can go ahead with this. This is just beyond me. It is so bizarre, ridiculous, and so wrong at so many levels that it just goes to prove that what a free-for-all this case has become, and how people, opportunists, are taking advantage of every aspect of this case, because this is clearly being done for publicity. And I could have understood if somebody who is not related to the case is doing it, because ऐसे लोग तो बहुत मिलेंगे जो पब्लिसिटी के लिए किसी की डेथ, किसी का कुछ भी हो, उसमें से अपना निकाल लेंगे. बट दिस गाय इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग somebody from the case who is one of the key accused. I cannot stress enough that how wrong this is. And remember, he is the same guy who said Sushant Singh's family was in the know about the drug angle, and whatever was going on in that, Sushant's family was also involved. They were also doing drugs, and he has made really tall and really explosive claims a couple of days back. I mean, who is going to take him seriously after he does something like this? आप मुझे बताइए कि इस केस में उनकी credibility क्या रह जाती है ऐसा काम करने के बाद. Clearly, if I were in Shruti Modi's place, I would think I need a better lawyer to defend me. What are your thoughts on this? Please let me know in the comment section. I rest my case.